Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is about imagination and fancy as understood by Coleridge and described in Biographia Literaria. Before starting this formal lecture, I want to make you understand imagination and fancy in a few simple words. According to uh, Biographia Literaria, according to Coleridge, imagination is a kind of quality of human being with the help of which he can create. So, imagination is a creative ability in us. This is one thing which the students must remember. Imagination is creative. Fancy, on the other hand, is not creative. The best example or the analogy given is that of a compound in chemistry and mixture. The difference between the mixture and the compound is just like imagination and fancy. In chemistry, a compound is a combination of two or more elements. When these two or more elements are combined, they make a new item. The characteristics of this new item are very different from the individual characteristics of its ingredients. For example, if we combine hydrogen and oxygen, two elements, as a result of hydrogen and oxygen combination, we have water. Now, we know that water doesn't have the characteristic either of hydrogen or of oxygen. Both the characteristics are not present in them. Hydrogen and oxygen have combined and they have made a completely different thing. It has created, these two have created a completely different object from hydrogen and oxygen, and the characteristic of water are different from hydrogen and oxygen. This is the example for understanding purpose, the example of imagination. On the other hand, fancy is not a creative ability. And the example of fancy is just like the mixture we have in chemistry. Mixture means combining two or more items, but when they are combined, a new item is not created, and the characteristics of the things combined together, they retain their characteristics, they are present there. So this is the example. For example, if we combine sugar and sand, for example, if you mix them, it will make a mixture. This mixture, even if you look at it, they will contain both the things, sugar and sand, and the characteristics of both of them will be present in the mixture. So a new thing is not formed. In the case of imagination, a compound, as we are giving an analogy for understanding purpose. In the case of compound, a completely different thing. In the case of a mixture, the thing which is made is not something new. So this is a creative ability in a human being, while fancy is not a creative ability. It combines things, and these things may look very beautiful, but a new thing is not formed. In the case of imagination, new thing is formed. You think about objects, you combine those objects, you break them in your mind, you fuse them, you mix them like a compound, and you come up with a new thing. This is the work of imagination. Fancy just combines the things, but new thing is not created. अब ये जो बात है, ये फॉर्मल लेक्चर के शुरू ही में
आप समझ लें कि इमेजिनेशन ह्यूमन बीइंग की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके ज़रिए वो क्रिएट करता है, तो ये क्रिएटिव है। फैंसी जो है ये क्रिएटिव नहीं है। ये फ़र्क हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल शुरू में आप इसको समझ लें। इमेजिनेशन की जो बेहतरीन एनालॉजी मिसाल दी जाती है वो एक कंपाउंड की तरह है। केमिस्ट्री में कंपाउंड इसे कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलें और ऐसे मिले कि नई चीज़ बन जाए, क्रिएट हो जाए, और ये नई चीज़ की खसूसियात उन चीज़ों से जिनसे ये बनी है बिल्कुल मुख्तलिफ हों। जिस तरह हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिसाल दी, ये दो एलिमेंट्स हैं, जब कंबाइन होते हैं तो पानी बनाते हैं। पानी में ना तो हाइड्रोजन की क्वालिटीज़ अलग से मौजूद हैं, ना ऑक्सीजन की अलग से मौजूद हैं, बल्कि एक डिफरेंट चीज़ बन गई है। ये इमेजिनेशन की मिसाल। फैंसी वो कैरेक्टरिस्टिक है हमें जो चीज़ों को कंबाइन तो करती है लेकिन और ब्यूटीफुल भी बना सकती है कॉम्बिनेशन में। जैसे आप इन रंगों को देख रहे हैं और ये ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ अब आप इसे बनाएंगे वो इमेज। फैंसी में आप कंबाइन करते हैं और इसकी मिसाल केमिस्ट्री की मिक्सचर की तरह है। अगर केमिस्ट्री का मिक्सचर हम ले लें, मसलन मिक्सचर का मतलब है जब हम शुगर को, चीनी को या रेत को दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये जो आमेज़ा बनता है इसमें दोनों की खसूसियात मौजूद होती है, नई चीज़ नहीं बनती। अलग अलग नज़र आता है कि ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक। तो फैंसी जो है ये नई चीज़ क्रिएट नहीं करती, क्रिएटिव नहीं है। इमेजिनेशन क्रिएटिव है, और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इमेजिनेशन ज़्यादा अहम है बनिस्बत फैंसी की। ये एक इंट्रोडक्टरी, बल्कि ये असल चीज़ ही सारे लेक्चर में यही होगी, लेकिन एग्जामिनेशन में लिखने के लिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। इमेजिनेशन की दोनों किस्मों को भी, उनमें डिफरेंस, फिर फैंसी और इमेजिनेशन में डिफरेंस, हम इमेजिनेशन और फैंसी से क्या मतलब लेते हैं, कॉलरिज से पहले क्या मतलब लिया जाता था, कॉलरिज ने इससे क्या मतलब लिया है, प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है, और इन दोनों का फैंसी के साथ क्या डिफरेंस है। तो ये जो सारा कुछ है ये हम विद एग्जांपल्स इस सारे लेक्चर का हिस्सा होगा। Now we will try to discuss what meaning is taken from imagination and fancy by a layman, by an ordinary man, by us if we are not discussing Coleridge, if we are not, for example, the students of literature, English literature, and we use this word imagination, then the meaning we take from it is that it is a kind of thinking ability for us as a layman. I'm not talking about Coleridge, I'm talking about the word imagination as it is used in ordinary life. By this word imagination we mean bringing to our mind those things which are not present in front of us. Though they are not present, we can still think about that. And we say that we imagined it, that we thought about it. So it is in the meaning of thinking for the ordinary man. Fancy, on the other hand, ordinarily is used for something which is beautiful. So this is the meaning which an ordinary person takes from the word imagination and fancy. Now coming to the effect that before Coleridge, there were different theories of imagination, and they were referred to as pre-Coleridgean theories of imagination. For example, in 17th century, these two words, both of them, imagination and fancy, they were used very vaguely. They were not clear, and they were used vaguely to mean, number one, fairy tale, and number two, make-believe. That is,
fancy and imagination both refer to something which is not true, which is imaginary, which is make-believe. This was the meaning taken in 17th century from these two words. Sometimes here and there, a distinction was made between imagination and fancy, though often it was not made. Often both of them were considered to be equal and to have the meaning of fairy tale and make believe. But if they differentiated these two, then uh, fancy, the word fancy was then used for sense impressions. Sense, for example, we have five senses. Impressions, for example, if you look at an object, you are looking, for example, at these notes now, and you have the impression of these notes, and these impressions go to your mind, and you keep them in your memory that you have seen such and such colors in the notes, and so on. These are sense impressions. So fancy is referred to as those sense impressions if a distinction is made, though rather most of the times the distinction is not made and the meaning, these two are taken as the meanings. This was also the case in medieval ages or in Middle Ages. Middle Ages is the time from 5th century to 15th century. And the Renaissance, was a kind of movement. There were many characteristics of this movement. For example, the love of knowledge and the love of money, and many more. So in medieval time or in Renaissance tradition, these two words they were used as imaginatio and fantasia. And once again, the meaning of both these words was often taken as one. And they were just like 17th century, not differentiated. But if a differentiation was made, then according to that differentiation, the word fantasia meant the lighter and less responsible kind of imaging. That is, fantasy or fantasia was considered lower in quality as compared to imagination. Uh, in the light of 17th century reasonableness, now in 17th century, they used the term reasonable or reasonableness by following good manners was referred to as something reasonable, and rationality rationality mostly was followed in 18th century, but it was there in 17th century as well. And based on this reasonableness, fancy lost its reputation, and there was a decline in the reputation of the word fancy, which means that fancy was something which was lower in quality as compared to imagination. And imagination had a new place of respect in the later part of the 17th century. So this was what was the meaning taken in 17th century, in the Middle Ages and Renaissance. In 18th century, once again, imagination was considered more important and more honorable term as compared to fancy. And softness, warmth, depth of good feeling, all these good emotions were attached with imagination. On the other hand, in 18th century, fancy was considered as a term with which were attached coldness and frolic behavior. That is,
imagination was considered something serious, while fancy something non-serious. And sometimes this importance of one and the less importance of another, they kept on changing. So sometimes fancy would become more important, sometimes imagination. However, the dominance was that of imagination in dignity, and its dignity was established, the dignity of imagination, the word, the term imagination, in the second decade of 18th century, that is 1720, that is the 18th century, the second decade in 18th century. So the superiority of imagination was considered. So this is the pre-Coleridgean theories of imagination. ये हमने कॉलरिज से पहले जो इमेजिनेशन को समझा जाता था उसका जिक्र किया है। ये अगर बच्चों को एग्जाम में लंबा पड़ता है तो वो बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला। आम जिंदगी में हम लफ्ज़ इमेजिनेशन इस्तेमाल करते हैं सोच के लिए, तस्वुर के लिए, और फैंसी हम खूबसूरत चीज़ को कहते हैं। कॉलेज से पहले 17th सेंचुरी में दोनों टर्म फेरी टेल और मेक बिलीव के लिए इस्तेमाल होता है। फेरी टेल का मतलब है परियों वाली कहानी और मेक बिलीव का मतलब है झूठ मूठ की चीज़। तो दोनों अल्फाज एक ही मतलब के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। हाँ, कभी कभार इनमें फ़र्क कर दिया जाता था, और जब फ़र्क किया जाता था तो फैंसी को सेंस इम्प्रेशंस का नाम दिया जाता है। सेंस इम्प्रेशंस का मतलब यह है, हमें 5 सेंसेस हैं। जब इन 5 सेंसेस से चीज़ों को चेक करते हैं, मसलन आप इस जगह को देख रहे हैं, आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं मेमोरी में, ये सेंस इम्प्रेशन है। तो फैंसी को इस सेंस इम्प्रेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और मिडिल एजेस में और रेनेसेंस में भी, मिडिल एजेस 5वीं सदी से 15वीं सदी तक का ज़माना है। रेनेसेंस एक मूवमेंट, तहरीक गुजर चुका है लिटरेचर में, और जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। उन्होंने इमेजिनेशो और फैंटेसिया के अल्फाज इस्तेमाल किए, तकरीबन हम माना। कभी कभार डिफरेंस के लिए फैंटेसिया को जब डिफ्रेंशिएट करते थे फैंटेसी को, तो इसको कम दर्जा दिया जाता था बनिस्बत इमेजिनेशो के या इमेजिनेशन की। और 17th सेंचुरी में चूंकि रीजनेबलनेस को फोकियत दी जाती थी और फैंसी आपको दूर ले जाती है रीजनेबलनेस से यानी रैशनैलिटी से, तो इसको कम अहम समझा जाता था। 18th सेंचुरी में एक मरतबा फिर 18th सेंचुरी यही ज़माना है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का, इमेजिनेशन डोमिनेंट हुआ और फैंसी जो है ये सेकंड हुआ। इमेजिनेशन के साथ सॉफ्टनेस, वार्मथ एंड डेप्थ ऑफ गुड फीलिंग्स ये अटैच किए जाते थे, और फैंसी के साथ फ्रॉलिक, फ्रॉलिक का मतलब है नॉन सीरियस, कोल्डनेस का मतलब है सख्त, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। कभी कभार ये रिवर्स भी हो जाता था, फैंसी को बेहतर समझते थे, इमेजिनेशन को कम समझते, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, कभी कभार ऐसा हुआ है। इमेजिनेशन डोमिनेंटली डिग्निफाइड था, और सेकंड डेकेड ऑफ द 18th सेंचुरी यानी 1720 ले लें, इसमें सुपीरियरिटी इमेजिनेशन की ये मुकम्मल तौर पे बैठ गई। Imagination is our creative faculty, and now we'll discuss its kinds and what is the meaning of imagination as understood by Coleridge and discussed in Biographia Literaria. As I told you right in the beginning, that imagination is our creative faculty, and it is our characteristic with the help of which we can create things. We
create things, but this creation takes place in two stages. Both of the stages, whether the imagination is primary or secondary, they actually, both of them, they are creative. Now, imagination actually is one, as you know. These are the parts. These are the stages of this one imagination. And we have already discussed that imagination actually is a creative faculty. So whether it's primary or secondary, both of them are creative, as both of them are imagination. As far as the primary imagination is concerned, Coleridge is of the view that this imagination, primary one, is the power of receiving impressions of the external world. We receive impressions of the external world, that is, we look at the objects of the external world, we look at the human beings, at the natural objects, at the things as well as the events. And we do all this through senses. We have got five senses, and whatever we receive through these senses is the power of receiving impressions. And we receive impressions with the help of these senses. Um, the impressions of the external world. All this is done through our senses. So we have the sight sense, we have the auditory sense, we have the tactile sense, the sense of touch, the gustatory sense, the sense of taste, and these five senses. Whatever is perceived through these are impressions, and these impressions are of the external world. They are taken into the mind with the help of our senses, five senses. So this is the power, this imagination primary, of perceiving these objects. We perceive, we look at them, we understand them. This perception, as I said, is with the help of not only the visual sight, visual images, they are also auditory images, tactile images, gustatory images. All these are with the help of the senses that we perceive these objects. These objects are perceived as a whole as well as the parts. For example, if you are looking at a human being, you can understand the human being as a whole, and you can also have the perceptions of his body parts. So, as a whole or in parts, both, they are perceived. And whenever we do this, we may not do it voluntarily. For example, if you are out walking here and there and look at the objects, this perception of the objects is involuntarily done. You look at the objects, you may not have the intention to or voluntarily try to look at that, but you just look at it, you perceive it, and this perception is done involuntarily. Then, when these things, these sensations of the outward world, they are received unconsciously, involuntarily, and they go into your mind. Your mind imposes some sort of order on those impressions of external world through senses. Now, you know, this sentence has not been explained by Coleridge. How is this order imposed on the objects of the external world through senses? This is not explained. However, we can say that in order to make sense of these objects are understood, and similar objects go to the similar places. That is, similar objects are attached with the similar other objects which are similar to that. And in order to remember them, we remember their shapes and we remember their size. As a result, it becomes a kind of clear image. We have a clear image of the outside world, um, and this perception process is the primary imagination. Though it is more or less similar to fancy, because in fancy too we have sense perceptions,
It would have been similar to fancy if there weren't the secondary imagination, as there is the second stage of secondary imagination. Therefore, this primary imagination is not considered as equivalent to fancy because the process continues and it is in the secondary imagination that creation takes place. Though the creation starts, the beginning point is this. It is with the help of the primary imagination which provides the raw material for the secondary imagination to work on and as a result to create something new. तो ये ज़रा उर्दू में भी सुन लें और मैं चाहूँगा कि मैं इसको रीड भी करूँ ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए, वर्ड फॉर वर्ड समझ आए। प्राइमरी इमेजिनेशन की हमने बात की कि आप जो चीज़ें देखते हैं तो आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि दुनिया की जितनी चीज़ें हैं उसको हम 5 सेंसेस से मालूम करते हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ का ठंडा गर्म मालूम करना हो तो सेंस ऑफ टच काम आएगा। अगर सुनने वाली चीज़ हो तो ऑडिटरी सेंस कान काम आएंगे। अगर देखने वाली चीज़ हो तो विजुअल सेंस आंखें काम आएंगी। अगर इसी तरीके से टेस्ट वाली चीज़ हो तो ज़बान काम आएगी। ये हमारे सेंसेस हैं और इन सेंसेस के ज़रिए हम एक्सटर्नल वर्ल्ड की इम्प्रेशंस लेते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ों को समझते हैं, परसीव करते हैं, उन का इम्प्रेशन हमारे जहन पे बनता है, पार्ट्स का भी और होल का भी। तो और ये काम इनवॉलंटरीली हो जाता है। मतलब ये है कि आप अगर बाहर निकले हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं तो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, आपकी मर्जी हो या ना हो आपको नज़र आ रही है और परसेप्शंस अंदर जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप वॉलंटरीली नहीं कर सकते, वॉलंटरीली भी कर सकते हैं, लेकिन पहले स्टेज में प्राइमरी इमेजिनेशन के ये चीज़ें इनवॉलंटरीली और वॉलंटरीली भी, लेकिन कॉलरिज कहता है इनवॉलंटरीली ये आपको नज़र आती हैं, ये आपको सेंस ऑफ टच से चेक कर सकते हैं, ऑडिटरी सेंस से चेक कर सकते हैं वगैरह वगैरह और ये आपके जहन में सारी जाती हैं। जहन इसको एक किस्म की तरतीब देता है। अब ये किस किस्म की तरतीब देता है ये बात कॉलरिज ने वाज़ेह नहीं की है। बहरहाल हमारा जो जहन है याद रखने की जो एबिलिटी वो रखता है तो वो तरतीब यूँ देता है कि जितनी चीज़ें सिमिलर किस्म की हों, एक किस्म की हों तो उसको एक जगह पे जमा करता है और यूँ याद रखने में ये आसान रहता है। तो ज़हन वो कहता है एज सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, जिससे पता चलता है कि इसको भी पता नहीं है कि कौन सा सॉर्ट ऑफ ऑर्डर। तो ये इसमें एक तरतीब इम्प्रेस करता है और एक शेप और साइज में इसको जानता है थ्रू सेंसेस और एक क्लियर इमेज आउटसाइड वर्ल्ड का हमारे जहन के अंदर बन जाता है। मैं इसको रीड करूँगा, जितना जितना हम आगे जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये लेक्चर लंबा होगा लेकिन चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो इस वजह 5 स्टार क्वेश्चन है और इसको समझना भी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सा है, समझना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको ट्रांसलेट भी करें। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज के मुताबिक इमेजिनेशन हैज़ 2 फॉर्म्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ merely the power of receiving impressions। प्राइमरी इमेजिनेशन फ़कत ये वो पावर है जिसके ज़रिए हम इम्प्रेशंस लेते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं। कौन सी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस। सेंसेस के ज़रिए हमारे 5 सेंसेस हैं, इन 5 सेंसेस के ज़रिए हम ये एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ें देखते हैं। इट इज़ द पावर ऑफ परसीविंग द ऑब्जेक्ट्स बोथ इन देयर पार्ट्स एंड एज ए होल। चीज़ों को हम होल भी समझते हैं कि मुकम्मल कैसे नज़र आता है
उसके पार्ट्स को भी देखते हैं कि पार्ट्स कैसे नजर आते हैं, दोनों परसीव हो जाते हैं हमारे दिमाग में। ये जो अमल है सुनने का, देखने का, टच करने का वगैरह, इट इज एन इनवॉलंटरी एक्ट ऑफ द माइंड। माइंड बगैर इरादे के ये काम करता है। इसका मतलब यह नहीं कि इरादे के साथ नहीं कर सकता, इरादे के साथ भी कर सकता है। बहरहाल उसके अल्फाज हैं तो हम इस्तेमाल करें। द ह्यूमन माइंड रिसीव्स इम्प्रेशंस एंड सेंसेशंस। इंसानी जहन ये जो इम्प्रेशंस हैं, एहसासात हैं, ये रिसीव करता है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड से, अनकॉन्शियसली एंड इनवॉलंटरली, बगैर सोचे समझे, बगैर विल के, बगैर मर्जी के। It imposes some sort of order on those impressions of the external world through senses. ये senses इन चीज़ों पे एक तरतीब लागू करती है। मैंने आपको बताया, ये वो नहीं बताता कैसे लागू करती है, आप भी इसी तरह लिखेंगे, ये तरतीब लागू करता है। reduces them to shape and size, इनके shapes और size को समझता है, so that the mind is able to form a clear image of the outside world, ताकि बैरूनी दुनिया के लिए एक इमेज बने। It is in this way that clear and coherent perception becomes possible. और यूं एक वाज़ेह और हम आहंग परसेप्शन, समझ, ये मुमकिन हो जाता है। तो ये प्राइमरी इमेजिनेशन हुई। आगे हम जाएंगे तो इस पे और भी समझ आएगी। प्राइमरी इमेजिनेशन में आप रिसीव करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड की इम्प्रेशंस को। ये पहला स्टेज है। ये स्टेज अगर यहाँ रुक जाता तो ये फैंसी बन जाता, लेकिन ये रुकता नहीं है। और नेक्स्ट स्टेज जो है ये सेकेंडरी इमेजिनेशन कहलाता है। सो लेट अस डिस्कस नाउ the secondary imagination and then we will discuss the differences. As far as the primary imagination is concerned, Coleridge tells us that this imagination, the primary one, is universal. It means that this imagination is present in all the people. Everybody has the ability to perceive things with the help of five senses. So this sensibility, this observation with the help of eyes, with the help of five senses, is done by all the people. So this is why he calls it something universal. It is present in all the people. Primary imagination is there. So it is possessed by all. As far as the secondary imagination is concerned, he believes, Coleridge, that it is the special characteristic of the artist. That is, this ability, this creative ability, secondary imagination, it isn't universal, neither is it possessed by all. It is peculiar and special for the artist. This is a special attribute, characteristic of the artist because he is a creator and this creative ability is with him. With the help of this secondary imagination, the artist makes the creation possible. The artistic creation is made possible. But it wouldn't be possible unless you have the primary imagination, which provides the raw material to the secondary imagination to create it. The difference, one of the difference between the two is this one is possessed by all, it is universal. Secondary imagination is possessed only by the artists. It is a special characteristics of theirs. Another difference with the secondary primary imagination is that this imagination is more active. That is, it works more as compared to the primary imagination. And the next difference is that this work is done consciously by the writer. This was unconscious. It was done involuntarily. This one is conscious. You should also know the differences now. The first, primary imagination, is universal. It is possessed by all. Secondary imagination is possessed by the artist. Primary imagination is passive.
secondary imagination is active. Primary imagination is involuntarily done. The secondary imagination is conscious and it is voluntarily done. It is with will, volition, willpower that this creation is done. So, in order to use this secondary imagination, the writer requires to do a little effort, the effort of will, which is also called volition and conscious effort. He has to do something with his effort. It wasn't like the primary imagination, which was automatic and involuntary. So, therefore, this secondary imagination, it works upon what is perceived by the primary imagination. The primary imagination provides the raw material for the secondary imagination to work upon, and this provision is also very important, which is done by the primary imagination. Now, the secondary imagination, with the use of this, the writer selects, he orders the raw materials, he reshapes, and he remodels. And uh, Coleridge uses the word asymplastic, which means shaping and modifying power. This secondary imagination is asymplastic. It has the shaping power, it has the modifying power, it remixes, it reshapes the objects of external world, it steeps them into glory and dream. These are his words, that these things are diffused, they are dissolved, they are dissipated, and they are destroyed in order to create. This is done by the secondary imagination. अब इसमें आपको प्राइमरी इमेजिनेशन की भी ज़्यादा समझ आ गई होगी कि प्राइमरी इमेजिनेशन में और इसमें फ़र्क क्या है। अलग से भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ से भी वाज़े हो गया है। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है ये यूनिवर्सल नहीं है। प्राइमरी इमेजिनेशन ये यूनिवर्सल है, सब में पाई जाती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन बेहतरीन चीज़ है, आर्टिस्ट या क्रिएटिव पर्सन में पाई जाती है, और आर्टिस्टिक क्रिएशन इसी सेकेंडरी इमेजिनेशन का नतीजा है। ये ज़्यादा एक्टिव है जबकि प्राइमरी पैसिव है। ये कॉन्शियस है, वॉलंटरी है, आप खुद करते हैं, जबकि प्राइमरी इनवॉलंटरी है। इसके करने के लिए कोशिश चाहिए, और प्राइमरी इमेजिनेशन की चीज़ें जो रॉ मटेरियल का काम करती हैं वो भी ज़रूरी हैं। प्राइमरी के बगैर काम नहीं चलेगा, अगरचे प्राइमरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, क्रिएटिव लफ्ज़, इसने क्रिएट किया है, एसिम्प्लास्टिक, जिसका मतलब है कि जिस तरह प्लास्टिक पे आप गर्म चीज़ रखते हैं तो सांचा बन जाता है, इसी तरह शेप बनाने वाली चीज़ को एसिम्प्लास्टिक कहते हैं, शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर वाली चीज़। और यूं सेकेंडरी इमेजिनेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ों को डिसॉल्व करता है, हल करता है, डिफ्यूज मिक्स करता है, डिसिपेट्स गर्क करता है इन ऑर्डर टू क्रिएट। मैं इसको पढ़ूंगा, मैं चाहता हूँ हर लफ्ज़ की समझ आपको आए और आपको दोबारा इसके बार बार करने की ज़रूरत ना हो। The primary imagination is universal. Primary imagination आफाकी है, it is possessed by all, सब में पाई जाती है। Secondary imagination on the other hand may be possessed by others, हो सकता है, दूसरों में भी हो सकता है, but it is the peculiar and distinctive, ये ख़ास नुमायाँ खसूसियत है, attribute of the artist की। It is the secondary imagination ही है which makes the artistic creation possible. आर्टिस्टिक क्रिएशन से मुराद नज़म लिखना, नावल लिखना, ड्रामा लिखना, सारी चीज़ें। सेकेंडरी इमेजिनेशन इज मोर एक्टिव, ये प्राइमरी इमेजिनेशन की निस्बत एक्टिव है, वो पैसिव है। एंड कॉन्शियस, ये कसदन है, वो ऑटोमेटिक है इन इट्स वर्किंग, अपने काम में। इट रिक्वायर्स एन एफर्ट ऑफ द विल, आपकी विल पावर इसमें इस्तेमाल होगी। वॉल्यूशन मर्जी को कहते हैं। कॉन्शियस एफर्ट, कसदन एफर्ट करेंगे।
It works upon what is perceived by the primary imagination. जो कुछ आपने प्राइमरी इमेजिनेशन में देखा है, परसीव किया है, उसको इस्तेमाल करता है. इट्स रॉ मटेरियल इज द सेंसेशन एंड इम्प्रेशन. इसका खाम माल ये वही इम्प्रेशन है सप्लाइड टू इट बाय द प्राइमरी इमेजिनेशन, जिसको प्राइमरी इमेजिनेशन सप्लाई करती है बाय एन एफर्ट ऑफ द विल एंड द इंटेलेक्ट. मगज का इस्तेमाल करते हुए, विल का इस्तेमाल करते हुए आप द सेकेंडरी इमेजिनेशन सेलेक्ट्स एंड ऑर्डर्स द रॉ मटेरियल. ये रॉ मटेरियल में से सिलेक्शन करता है, तरतीब देता है, एंड रीशेप्स एंड रीमॉडल्स इट. इसको रीशेप करता है, मॉडल करता है इनटू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, और नई चीज़ खूबसूरत बनाता है. और ये अल्फाज कॉलरिज के हैं. इट इज़ एसेंप्लास्टिक, जिसका मतलब है ए शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर. ये शक्ल देने वाली, तब्दील करने वाली ताकत है. सेकेंडरी इमेजिनेशन विच बाय इट्स प्लास्टिक स्ट्रेस, कि जिस तरह प्लास्टिक पे आप जोर डालते हैं गर्म चीज़ की, रीशेप्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड. तो एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ें रीशेप होती हैं एंड स्टीप्स देम. और ये वो पावर है जो नहला देती है इन चीज़ों को विद द ग्लोरी एंड ड्रीम, शान में और ख्वाब जैसे माहौल में, दैट नेवर वाज ऑन सी एंड लैंड, जो ना आपने ज़मीन पे देखी होगी ना समंदर पे. इट इज़ एन एक्टिव एजेंट. ये सेकेंडरी इमेजिनेशन एक एक्टिव एजेंट है विच डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स. ये हल करता है तमाम चीज़ों को, मिक्स करता है, गर्क करता है इन ऑर्डर टू क्रिएट, ताकि ये क्रिएट हो जाए नई चीज़. Now you see, the differences also have been highlighted of the secondary imagination as compared to the primary imagination, and this secondary imagination continues that this imagination is actually is at the root of all poetic activity. Poetic activity, writing poetry, thinking about poetry, and your words and combinations of them, at the root of it is secondary imagination. It is so important, and it harmonizes and reconciles the opposites. How can the opposites be reconciled? For example, on the one hand, we have art, which is actually, and on the other hand, we have nature, which is real. Now, the artist reconciles these opposites of reality and unreality with the help of his imagination by presenting them in such a way that that unreal looks real to us. And it's a kind of make-believe, which Coleridge calls the willing suspension of disbelief. And this willing suspension of disbelief is created, and these opposites look the same. That is, the art, something which is unreal, looks now natural, something which is real. So this is that reconciliation of the opposites, and hence Coleridge calls it a magical synthetic power. It is a magical synthetic power because it reconciles the opposites. Magical. It makes the unreal real with the help of imagination. It happens. Secondary. So it's the kind of unifying power. It unifies things. With the help of this unifying power, unifying because it unifies the objects collected by the primary imagination and then destroys them, diffuses them in order to create something new. So, therefore, with the help of this unifying power, the poet, the soul of the poet, colors the nature. That is, natural objects are described in such a way that they are colored with the imagination of the poet. So the natural objects no more remain dull to us, no more
look dull to us. They are colored by the soul or the imagination of the poet, and the soul of the poet is steeped in nature. That is, he is steeped in nature, and nature is steeped in him. So both of them are mixed together. It's a unifying power. It unifies the two. The natural thing and the poet, they are unified. And when they are unified, the identity is discovered between the poet and the nature. We have already discussed this point in Wordsworth. Wordsworth and Coleridge, they believed in pantheism. Pantheism means that every human being has the spirit. This same spirit is present in trees, oceans, skies. The same spirit and this same spirit is there in God too. So as a result, we are connected with a webwork or network with each other as well as with natural objects. This identity of the connection between us, the human beings, and the nature is discovered. And when this is discovered, we see wonders happening around us because now we are looking at God. We are looking at ourselves, we are looking at nature, we are looking at our brothers and sisters, and we find the same spirit there, and we are wonderstruck. And who does this? The secondary imagination does. ये जो हिस्सा है सेकेंडरी इमेजिनेशन का, इसमें ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, तकरीबन अक्सर बातें हो गई है, लेकिन ये जो पोएटिक क्रिएशन है, इसकी जड़ में असली जो चीज़ मौजूद है वो यही है, सेकेंडरी इमेजिनेशन, और ये अपोजिट्स को रिकंसाइल करती है, यानी मुखालिफ को यकजा करती है। इसकी वजाहत मैंने कर दी कि एक अनरियल है, जैसे ड्रामा है, जैसे पोएम है, जैसे कोई वाक़या है जिसको नावल में लिखा गया है, ये अनरियल है। राइटर इसको ऐसे पेश करता है जैसे ये वो रियल हो। तो यूँ इसने रिकंसाइल किया रियल और अनरियल को, दो अपोजिट्स को रिकंसाइल किया, और इसी वजह से कॉलेज इसको कहता है मैजिकल सिंथेटिक पावर। सिंथेटिक कहते हैं यकजा करने वाली। कौन सी चीज़? सेकेंडरी इमेजिनेशन, ये मैजिकल सिंथेटिक पावर है, और इसी यूनिफाइंग पावर के ज़रिए वो तमाम नेचर को कलर करता है। यानी सेकेंडरी इमेजिनेशन के थ्रू वो जिस चीज़ के बारे में लिखता है, नेचुरल चीज़ के बारे में, वो उस इमेजिनेशन से कलर्ड हो जाता है और इसकी अपनी रूह कलर हो जाती है नेचर से। अब ये देखें, द डिसोल्यूशन इन नेचर है, यू बिकम वन विद नेचर। क्यों? इसको वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, पैंथीज़म जिसको कहा जाता है, जिसका मतलब ये होगा कि इसको नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में गॉड नज़र आता है, अपने अंदर भी गॉड की रूह नज़र आती है, उधर भी नज़र आती है, और एक डिस्कवरी इसको हो जाती है कि उसने गॉड को देख लिया है, उसने रियलिटी को देख लिया है। You already now know the difference between the primary and the secondary, but as a separate heading, it helps in the examination also. The checker also feels easy and happiness when he looks at the headings. So a different heading is also given here. Now, as far as the imagination is concerned, both of them are imagination. Primary or secondary, both of them are imagination. So as far as the kind is concerned, there is no difference. The kind is the same, imagination. The difference is that of degree. So the lesser degree is that of primary. The best degree, the greater degree is that of the secondary. But the kind is the same. Both are imaginations. Secondary imagination, as we have discussed, is more active. Primary imagination is passive.
Secondary imagination is the result of volition, consciousness, voluntary, that is your willpower. You do it by using your willpower, while primary imagination is involuntarily done. The next is that primary imagination is universal, it is present in all the people. Secondary imagination is enjoyed only by the artists. So you can find out these differences in 1, 2, 3. If you want to make your own notes, you can say it in 1, 2, 3. For example, the first difference is now there is no difference in the kind. There is difference in degree. The first thing. Secondly, the primary imagination is passive. The secondary imagination is active. Next, the primary imagination is involuntary, unconscious. The secondary imagination is conscious and voluntary. The primary, next, third, the primary imagination is universal. It is present in all. The secondary imagination is not universal and it is present only in the artists, creative artists. ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, इसको सुन भी लेते हैं. फ़र्क तो आपको पता चल गया है प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन का. काइंड में तो फ़र्क नहीं है, दोनों काइंड इमेजिनेशन ही है. डिफरेंस डिग्री में है. प्राइमरी इमेजिनेशन की डिग्री कम है, सेकेंडरी की ज़्यादा है. प्राइमरी इमेजिनेशन पैसिव है, सेकेंडरी इमेजिनेशन एक्टिव है. प्राइमरी इमेजिनेशन अनकॉन्शियस है, सेकेंडरी इमेजिनेशन कॉन्शियस है. प्राइमरी इमेजिनेशन इनवॉलंटरीली डन है और सेकेंडरी इमेजिनेशन वॉलंटरीली डन है. प्राइमरी इमेजिनेशन यूनिवर्सल है, प्रेजेंट इन ऑल है. सेकेंडरी इमेजिनेशन सिर्फ आर्टिस्ट्स में पाया जाता है. मेरे ख्याल में ये क्लियर है. और फैंसी का भी जिक्र नहीं हुआ, तो नेक्स्ट में डिफरेंस है इमेजिनेशन और फैंसी का, जिसकी भी आपको समझ आ जाएगी. So let us do the difference between imagination and fancy. You have now understood what is meant by imagination. Right in the beginning, I told you that fancy is not a creative power. Imagination is creative power. Imagination, including primary and secondary, is creative. The best of them is the secondary, which is more active, but the primary is the part of the secondary, so we cannot separate them. Fancy is a separate thing. Its kind is also different. It is not imagination. So therefore, the kind is different. And then imagination was creative. This is the difference between them. Imagination was creative. Fancy is not a creative power. It only combines what we perceive. We look at the objects. For example, you are looking at green color, red color, yellow color, gray color, and red color, pink color. These colors, you only are combining these colors in your mind, but you are not creating anything new. That example of the mixture and chemical compound will also be discussed here. So it only combines the things into beautiful shapes. Of course, beautiful, but not different. The ingredients which we find have their own characteristics retained. The characteristics which they had, they are present there, because the things do not fuse, they do not unify as it happened in the secondary imagination. The best example given is with the chemical processes. There are two processes in chemistry. One is called compound, the other is called mixture. A chemical compound is the one, as I've explained right in the beginning of this lecture, in which two different elements, two or more than two, join together to make something totally new.
the characteristic of this new thing developed is very different from its ingredients. The example is that of hydrogen and oxygen. When they combine together, they make water, H2O, but the characteristics of H2O, the water, are very different from hydrogen and oxygen. This is the example of imagination. On the other hand, fancy is like mixture. For example, if you combine sugar and sand, they, even when combined together, would not lose the characteristics of the ingredients are still there. You still have sugar in it, you still have sand in it, and they retain their characteristics, their properties, their identities are there. So this mixture is the example of fancy. Fancy keeps the things together only, but it does not mix them, fuse them, or unify them. On the other hand, imagination fuses them, unify them, and make a new thing that is a creative process. This one is not a creative process. तो ये अब आपको फैंसी की भी समझ आ गई है. फैंसी जो है ये क्रिएटिव नहीं है. तो फिर ये क्या करती है? ये चीज़ों को परसीव करती है और उसको एक यकजा रखती है. जैसे यहाँ मैंने इन कलर्स को यकजा किया हुआ है, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं बना रहे हैं. तो ये सिर्फ यकजा करती है, फ्यूज़ और यूनिफिकेशन नहीं करती. बेस्ट एग्जाम्पल मिक्सचर और केमिकल कंपाउंड का है. ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ. शुरू से ले और शुरू से भी आप सुन सकते हैं, यहाँ से भी ये आप देख सकते हैं. तो एक की मिसाल मिक्सचर की है, दूसरे की कंपाउंड की है. और जो कंपाउंड है इसकी मिसाल इमेजिनेशन की है, मिक्सचर की मिसाल फैंसी की है. इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आए. इमेजिनेशन एंड फैंसी ऑन द अदर हैंड डिफर इन काइंड. ये काइंड में भी डिफरेंट है. प्राइमरी और सेकेंडरी काइंड में डिफरेंट नहीं थे. दीज आर एक्टिविटीज ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स. फैंसी और इमेजिनेशन दो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं. फैंसी इज़ नॉट ए क्रिएटिव पावर एट ऑल. ये बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है. इट ओनली कंबाइंस व्हाट इट परसीव्स इनटू ब्यूटीफुल शेप्स. जो कुछ देखता है फैंसी उसको इकट्ठा करता है और ब्यूटीफुल शेप में रखता है. बट लाइक द इमेजिनेशन इट डज नॉट फ्यूज एंड यूनिफाई. लेकिन इमेजिनेशन की तरह चीज़ों को यकजा करके पेश नहीं कर सकता, फ्यूज नहीं कर सकता. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड केमिकल कंपाउंड. इन दो में जिस तरह का फ़र्क है वही इनमें है. इन अ मिक्सचर ए नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर ब्रॉट टुगेदर. मिक्सचर में मुख्तलिफ किस्म के अज्जा इकट्ठे किए जाते हैं. दे आर मिक्सड अप बट दे डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज. मिक्स तो हो जाते हैं लेकिन अपनी मुनफरिद प्रॉपर्टीज रखते हैं. दे स्टिल एग्जिस्ट एज सेपरेट आइडेंटिटीज. उनकी शनाख्त अलग अलग नज़र आती है. लेकिन इन ए केमिकल कंपाउंड ऑन द अदर हैंड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कंबाइन टू फॉर्म समथिंग न्यू. मुख्तलिफ अज्जा कंबाइन होकर नई चीज़ बनाते हैं. The different ingredients no longer exist as separate identities. और ये अलग अलग आइडेंटिटीज़ के तौर पे नहीं होती. They lose their respective properties. वो अपनी क्वालिटीज़ खो देती हैं and fuse together to create something new and entirely different. और नई चीज़ बनाते हैं. A compound is an act of creation. Compound ये क्रिएट हो जाता है नई चीज़. While a mixture is merely bringing together of a number of separate elements. जबकि मिक्सचर में बहुत सारी चीज़ों को मिक्स किया जाता है, सेपरेट एलिमेंट्स रखे जाते हैं, फ्यूज नहीं होती. सो दिस इज द डिफरेंस. देयर इज येट अनदर एग्जाम्पल ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन given from Shakespearean drama, from Shakespearean poem by Coleridge. He explains again that imagination is a creative power and it creates new shapes and forms. And it does this by fusing and unifying the different impressions received from the external world. Fancy, however, is not creative. It's a kind of memory.
You keep things in memory, and it's a kind of memory. There is no coloring from the mind, no coloring of imagination. The examples are given from Shakespeare's Venus and Adonis. Venus is the goddess of love. She wants to seduce Adonis, a handsome young boy, and these lines are delivered here as an example of fancy, as we said. Fancy is not creative, it is not fusing, it is just combining the elements but not fusing them. So, this is what has been done by Shakespeare in Venus and Adonis in these lines. In these lines is described the situation of Venus seducing Adonis. The line says, "Full gently now she takes him by the hand." She refers to Venus. He, him, excuse me. Him refers to Adonis. Full gently now she takes him by the hand. Venus takes Adonis by the hand. She clutches his hand. And now a simile is given, a kind of metaphor is given. The hand of the woman, Venus, is compared with lily, is compared with snow, while the hand of Adonis is compared with lily. Both of them are white. And lily prisoned in a jail of snow. Lily is the hand of Adonis, and snow is the hand of Venus. Lily and snow are images, they are not fused, they are just mentioned. Two things, beautiful things, are combined. Two images, beautiful but not mixed. Example of fancy. There is another. Or ivory. Um, Once again, ivory is, elephant's tooth, which is again white in color. In an alabaster band, alabaster is also white in color. So both the hands, one hand is like ivory, as white as ivory, the other is as white as alabaster. So once again, two images are given, but there is no fusion of the two. So you can see this is given as the example of fancy. Now coming to the example of imagination from the same poem, he gives the example of these two lines. The line says, "Look how a bright star shooteth from the sky." Now this Adonis doesn't want to be seduced. Therefore, he goes away from Venus, and this going away from Venus is compared with the shooting star. He goes in such a speed away from Venus as the bright star shooteth from the sky. Just like the star which shoots from the sky, so glides he, so moves he, goes away Adonis in the night from Venus' eye. This, he says, is the example of imagination, because a lot of fusion has taken place. A lot of images have been combined. Images and feelings have been given to us without effort, without discard. For example, from these lines, just two lines, we can understand the beauty of Adonis because it is now compared with the bright star. From the same only two lines, we can understand the rapidity of the flight, how quickly he went away from Venus. From the same two lines, we can understand
the yearning yet helplessness of the enamored gazer. The enamored gazer here is Venus. Venus is I. She is enamored. She is in love with this guy, and therefore this thing is present in this image. From Venus, night from Venus's eye. That image of the enamored gazer onlooker is also there in these two lines. There is then the shady ideal character thrown over the whole. The whole thing is described in an ideal form. This is that fusion. Bright star shooteth from the sky. The images are not just uh, kept side by side, but the images are mixed in such a way that a new thing has been created, which is a lot more meaningful than fancy. अब ये सुने, साथ में ट्रांसलेशन भी करता जाऊंगा मैं। इसमें एग्जाम्पल है इमेजिनेशन और फैंसी की शेक्सपियर की वीनस और एडोनिस नज़म से। मैं इसको पढ़ता हूँ ताकि हर लफ्ज़ समझ में आपको आ जाए। Thus imagination creates new shapes and forms of beauty by fusing and unifying the different impressions it receives from the external world. ये तो हम बार बार कर चुके कि इमेजिनेशन नई शेप्स क्रिएट करता है, फ्यूज़ करता है, यूनिफाई करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ों को। फैंसी इज़ नॉट क्रिएटिव। ये अब फैंसी का पहले मरतबा जिक्र यहाँ आ रहा है, ये क्रिएटिव नहीं है। इट इज़ अ काइंड ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी की तरह है, जिस तरह कोई चीज़ मेमोरी में रहती है, मिक्स नहीं होती, इस तरह ये। इट आर्बिट्रेरली ब्रिंग्स टुगेदर इमेजेस। आर्बिट्रेरली का मतलब है हाच पाच, बगैर तरतीब के चीज़ों को इकट्ठा करता है। एंड इवन व्हेन ब्रॉट टुगेदर, और ये चीज़ें जब इकट्ठी भी हो जाती हैं, दे कंटिन्यू टू रिटेन देयर सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखती हैं। दे रिसीव नो कलरिंग और मॉडिफिकेशन फ्रॉम द माइंड। इमेजिनेशन से इसको कोई कलर नहीं मिलता। इट इज़ मेयरली मैकेनिकल जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन का मतलब है साथ, हमरा। ये सिर्फ चीज़ों को हमरा रखने के बराबर है। एंड नॉट ए केमिकल फ्यूजन, और कीमियाई फ्यूजन की तरह नहीं है। Coleridge explains the point by quoting two passages from Shakespeare, Venus and Adonis. ये उसकी नज़म है। वीनस ये गॉडेस ऑफ लव भी है, और एडोनिस को वो ट्रैप करना चाहता है, सिड्यूस करना चाहता है, लेकिन वो नहीं होता। तो ये लाइन फैंसी की एग्जाम्पल है। फुल जेंटली नाउ शी टेक्स हिम बाय द हैंड। वीनस एडोनिस का हाथ पकड़ती है। अब हाथों का कंपैरिजन इधर है। ए लिली प्रेजेंट इन ए जेल ऑफ स्नो। ऐसे लगता है कि बर्फ के हाथ में लिली का फूल आ गया। दोनों इमेजेस हैं, सफ़ेद हैं, लिली और स्नो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन फ्यूज नहीं हुए। और आइवरी इन एन एलाबास्टर बैंड, और ये भी इमेजेस है, जैसे हाथी दांत सफ़ेद है, या एलाबास्टर जिसको हम संगमरमर भी कह सकते हैं, सफ़ेद होता है। तो इस तरीके से इन दोनों के हाथ सफ़ेद थे। तो आप देख रहे हैं एक ब्यूटी तो पैदा हो गई है, लेकिन इन लाइनों की तरह नहीं है जो कि इमेजिनेशन की एग्जाम्पल है। इन दीज लाइन्स इमेजेस आर ड्रॉन फ्रॉम मेमोरी। इमेजेस आर ड्रॉन फ्रॉम मेमोरी से इमेजेस लिए गए हैं। लिली, स्नो, आइवरी, अलाबास्टर, ये बट दे डू नॉट इंटरपेनेट्रेट इनटू वन अनदर। एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। The following lines from the same poem illustrate the power and function of imagination. मंदरजा झेल में पावर ऑफ इमेजिनेशन आपको नजर आएगी। Look how a bright star shooteth from the sky. ये देखें किस तरह एक खूबसूरत स्टार शूट होता है आसमान से, बिल्कुल इसी तरह। So glides he. एडोनिस जाता है, भागता है इन द नाइट फ्रॉम वीनस आई, वीनस की आंखों से दूर। इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं जिसमें ब्राइट स्टार से पता चलता है कि वो ब्यूटीफुल है। शूटत तेजी की तरफ इशारा है, और फ्रॉम वीनस आई से मुराद एक मोहब्बत करने वाली जिससे मुराद है वो इसमें शामिल है। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक इन सिर्फ दो लाइनों में मौजूद है,
اور وہ یہ ہے how many images and feelings says Coleridge are here brought together without effort and without discord. دیکھیں کس طرح غیر ہم آہنگ کیے ہوئے بغیر کوشش کے بہت ساری امیجز یہاں آ گئی ہیں. دا بیوٹی آف ایڈانس کی خوبصورتی, دا ریپیڈیٹی آف دا فلائٹ کہ کتنا تیز ہو گیا, دا یارننگ یٹ ہیلپلیس آف انامورڈ گیزر. یارننگ کا مطلب ہے ترسنا, انامورڈ کا مطلب ہے محبت میں مبتلا, گیزر لوکر آن لوکر دیکھنے والی, اینڈ شیڈ آئیڈیل کیریکٹر تھرون اوور دا ہول, اور تمام چیز پر ایک آئیڈیل کیریکٹرائزیشن ڈالی گئی ہے. اور کالرج فینسی از دا ڈریس آف پوئٹک جینیس. کالرج کے لیے فینسی صرف لباس ہے پوئٹک جینیس کا. امیجینیشن از اٹس ویری سول, اس کا سول امیجینیشن ہے, which forms all into one graceful and intelligent whole, اور یہ ساری چیزوں کو ایک خوبصورت ہول میں کنیکٹ کرتی ہے. It was a long lecture. That's for now. Thank you and good luck.